Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PRECB Practice app. Download now. देखिए, अब क्या होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट जब फ्लो करता है तो करंट क्यों फ्लो करता है? तो करंट इसलिए फ्लो करता है कि हम एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव चार्ज। लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पॉजिटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस साइड हायर पोटेंशियल है, इस साइड लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो अब आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा। तो जब हम किसी भी कंडक्टर को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वायर में क्रिएट कर देता है। तो नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ फ्लो करने लगते हैं। हाँ. तो जब वो फ्लो करने लगते हैं, तो जब वो फ्लो करते हैं तो जिस स्पीड से वो फ्लो करते हैं दैट स्पीड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So how does it flow? Because electrons move करना वायर में स्टार्ट हो जाता है because of the current electricity. वो potential difference करता है and the electrons start to move. And the speed with electron is moving in the wire in your house, that is called as drift velocity. So देखिए, यदि हम एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका लार्ज फिगर मैंने बनाया, एक वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है, तो नेगेटिव चार्ज जितना मूव करता है उसके ऑपोजिट हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है सिद्धार्थ, वो बहुत ही रैंडम होता है। यदि एक कंडक्टर में लें तो देयर इज रैंडम मोशन। ठीक है, इस तरह से कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर चला गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे, इस तरह से रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन रहता है। All the electrons are in random motion. All free electrons in a conductor are in random motion. Okay. मान लीजिए कि there are n electrons, n free electrons. तो आप इन सब के वेलोसिटी को जब ऐड कीजिएगा, इस n फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब रैंडम मोशन में है, और रैंडम मोशन में है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी है, और उन सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को लेके इफ यू ऐड अप यू शुड गेट एन आंसर 0। इफ यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर 0 तो उसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 नहीं है, और इस तरह से होगा कि आपने कंडक्टर को टेबल पे रख दिया, वो कंडक्टर खुद चलने लगेगा। ठीक है, सो बेसिकली कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उन सबका वेलोसिटी ऐड करके हमेशा 0 होना चाहिए। यदि ऐड करके 0 नहीं हुआ, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंडक्टर इज नॉट 0। दैट मींस कंडक्टर विल स्टार्ट टू मूव ऑन इट्स ओन। दैट विल बी लाइक अ मिरेकल। सबको आप घर में बुला के दिखाएंगे कि ये देखो, ये तो चलने लगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो रैंडम मोशन में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उन सब का वेलोसिटी ऐड कर दीजिएगा तो वो 0 आना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो जाए। नाउ वी कनेक्ट दिस सेम कंडक्टर, नाउ in the same conductor this electron was moving like in the random motion like this, which I drew earlier. Now if I connect this same conductor to a battery, and this is the symbol of battery, I hope you know this symbol of battery. If I connect this same conductor to a battery, then there is a net potential difference. Fine. As a result, this let me change the polarity. So as a result, in this conductor an electric field
will get established in this direction. Because this is plus, this is minus. The electric field is always from higher potential towards lower potential. This side is high potential, this side is low potential. So in this wire, there will be electric field everywhere. Like this. This is electric field. This is electric field. Fine. So the electric field is always from higher potential towards lower potential. So this electron will get a force which is in the opposite direction. So this electron now will have two motion. One, the random motion, and the other motion. So this extra distance covered is due to this distance is due to potential difference or electric field. So the net velocity here is made up of two components. One is the random velocity, random motion, and the other, let's say I call this as, this is due to electric field. So now the total velocity of the electron will be made up of two parts. One is the random motion part, one is the electric field that we have applied. So this distance is due to this. Ye jo distance hai, this is due to this electric field. We know from electrostat that force is equal to Q times E. So I can write that the force acting on the electron is E times E, because the charge on an electron is E. So this is force on electron. So from here I can say that the acceleration of electron is E by m, mass of electron. So here m is mass of electron. Fine. So basically, what happens, Siddharth, inside the conductor, that all the electrons, they accelerate when we apply electric field with this acceleration. They accelerate, but what happens? They collide also with other electrons or with the lattice of the conductor. Fine. And as a result, when they collide, they come to a stop. But again, they accelerate because continuously electric field is present. So what happens? It's like a motion where the electron starts and somebody is in front of it. It collides, again it accelerates, again it collides, again it accelerates. So this keeps on happening. And in this way, the electron moves forward. So God knows from this point, from here to here, how many times it would have collided with the lattice or with other electrons. Fine. So we define a term here that is called as mean free path. This term will also come across in thermodynamics. Mean free path, it is the distance covered between two successive collisions. Fine. So inside the conductor, the electrons, when they start moving, they collide also. So between two successive collisions, the path which is free for its movement is called as mean free path. It is the distance covered between two successive collisions. So we have V is equal to U plus AT. This formula. So the final velocity V net is U, that is due to the random motion, plus acceleration E by m into time. Let's say the time is t1. This is I'm writing for one electron. Let's call this as U1. For electron 1, let's call this as V1. So for electron 2, I can write U2 plus E by m T2. This is for electron 2. Similarly, we will have n electrons. So I can write Vn is Un plus E by m something Tn. And where T1, T2, T3, Tn, R is the time between two successive collisions.
T1 Tn, time between two successive collisions. What is? When we will add this, I'll get V1 plus V2 Vn, and we will have U1 plus U2 Un plus EE by M, which is common, T1 plus T2 Tn. So can you tell me what is sum of all this number or all this velocity? This is 0. Very good. So we have V1 plus V2 Vn, because this is due to random motion, so this is 0. And on this side we have EE by M, and this is T1 plus T2 Tn. Suppose I divide this by n. So on this side also I have to divide by n. Okay. So basically where n is the total number of electrons. So what we get here is the average velocity of n electrons, and we call this as drift velocity. The average velocity of all the free electrons inside a conductor when potential difference is applied is called as drift velocity. This is equal to EE by M into tau. This is also the average time between two successive collisions, and this is called as tau is called as relaxation time. This is the average time between two successive collision. Drift velocity, it will be in the direction of motion of positive charge, और पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, तो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कंडक्टर तो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख देते हैं अच्छे से, E tau by m into इलेक्ट्रिक फील्ड.